हाँ चलो अब आ गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्या, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही है. Is a an R module M is a finitely generated module if there exists some x1, x2 up to so on xn in M such that so M, and actually these are generating set, so and this is a set of all possible linear combinations which we can construct with the help of x1. So if the set of all, so first we need to understand that the R module generated by x1 up to xn is a set of all possible linear combination which we can construct like a subspace. जैसे हम subspace को generate करते हैं, vector space को generate करते हैं with the help of basis. In the same way, if we have some fixed elements of M, then the set of all possible linear combination of fixed elements is also an R module. So if this is an R module, it is equal to whole M. Then we will say that M is a finitely generated R module. So if M could be generated by a finitely many elements, or every element of M, or equivalently you can say that any element of M could be written as a linear combination of x1, x2 up to so on xn. Then this M is called a finitely generated R module. So vector space में usually आप finite dimensional vector space में example देखते हैं तो वहाँ पे शायद आपने ऐसी examples ना देखी हो जो finitely generated module नहीं. वहाँ पे जितनी भी vector spaces देखी होंगी, they are all finitely generated. That is, they are finite dimensional vector spaces. उनकी जो basis set होता है finite. But here I will give you an example. In fact, I will give you an example of a vector space say that it is not a finitely generated module. That is, you cannot find finite basis. Basis का खैर concept तो बाद में देखेंगे. Basis का word use नहीं कर रहा, spanning set का word use करूँगा. क्योंकि finitely generated अगर module होता है, so actually you can also say that it is spanned by finitely many elements. So, for example, what we have seen that what we have seen earlier that C over R is generated by 1n iota. C over R is generated by 1n iota because every element of C over R could be written as a linear combination of 1n iota. So C over R is, so what we can say that C is a finitely generated module. In fact, any cyclic module is a finitely generated module. Any cyclic R module है क्योंकि उसका तो एक ही जनरेटर होता है. Any cyclic R module है is a finitely generated module. Now one more example. Let M it is equal to kx and R it is equal to k. That is, M को मैंने क्या ले लिया, polynomial ring ले लिया, और R को क्या ले लिया, polynomial ring over a field k ले लिया, और R को क्या ले लिया, k ले लिया. One can check that k of x is a k module. That is, polynomial ring over k is a k module. K module की तमाम properties को satisfy कर रहा है.
Now, what you can say about the generating set of this kx module? देखिए, अब प्रॉब्लम ये कि इसका ओवर के यहाँ पे हर एक एलिमेंट किस फॉर्म में होता है? इट इज अ एलिमेंट, every element is a linear combination of powers of x. अब मसला ये है कि there is no bound on the degree. So kx contain a polynomial of any degree, 100 degree, 1 million degree, 10 billion degree, 1 billion degree. So it contains a polynomial of any degree. So that's why if you want to see this thing as a k module, तो यहाँ पे जब कभी कोई polynomial होगा, let's say अगर polynomial हुआ a1 x100 या x100 हुआ, sorry ऐसा let's say a100 x100 हुआ, so actually up to so on, so you need, so actually this f of x is a linear combination of which powers of x, जिनको monomials भी बोलते हैं, usually powers of x को हम monomials बोलते हैं, ये आपने शायद पहले भी पढ़ा हो कि सिंपल एक दो टर्म वाला उसको बाइनोमियल बोलता है, एक टर्म वाला उसको मोनोमियल बोलता है. So any power of x is a monomial, तो मैं monomial का वर्ड ज़्यादा प्रेफर करूँगा यूज करना. So actually any element of a polynomial is a linear combination of monomials, and there are infinitely many monomials. यहाँ पे तो आप किसी भी डिग्री का एक monomial बना सकते हैं. So इसका मतलब कि whenever you have an arbitrary polynomial, तो आपको कुछ monomials चाहिए to generate that element, मगर there is no bound on the degree of monomials. कि आप किसी भी उस generating set में हर एक डिग्री का monomial involved होगा. It's mean that actually this k of x as a k module, it's mean that k of x as a k module, it is generated by, so k of x as a k module, it is generated by 1x cube up to so on. कि ये हर एक से ये जनरेट हो रहा है. Why? Because whenever you will have an arbitrary polynomial, so it could be a linear combination of some finite polynomials, but there is no degree bound on that number on monomials. So that's why we need to take in the generating set, we need to take monomial of any degree, because हमें किसी भी डिग्री का monomial हमें चाहिए होता है generating set में. So that's why the generating set would be an infinite set, and also it is an example of infinite dimensional vector space. एक infinite dimensional vector space है, because k is a field, so that's why this is also a vector space. और इसकी जो basis set है वो वो countable है, finite countable है but finite नहीं, अनकाउंटेबल नहीं है. कुछ ऐसी वेक्टर स्पेसेस भी होते हैं इनका बेसिस सेट अनकाउंटेबल होता है, बट हियर द बेसिस सेट इज काउंटेबल बट नॉट फाइनाइट. सो इट implies that actually k of x is not a finitely generated module. In fact, as a vector space, k of x is an infinite. जी sorry, the finitely generated k is not, सही कह रहा, it's not a finitely generated k module. हाँ कि यहाँ पे k मेंशन करना जरूरी है ना, कि क्योंकि मैं हर मर्तबा आप लोग को बता देना कि आप लोग को याद है ना, क्योंकि अगर मैं kx को ओवर kx ले लेता, फिर इनको ओवर रिंग ले लेता, तो वो मॉड्यूल होता, मगर वो फाइनाइटली जनरेट होता था क्योंकि वो 1 से जनरेट होता. सो दैट्स व्हाई मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेंशन करता रहूँ कि हम इसको एज अ इस चीज के ऊपर मॉड्यूल लें. तो अगर मैं kx को ओवर kx ले लेता, वो तो फिर 1 से जनरेट हो जाता, फिर दैट्स हाउ फाइनाइटली भी हो जाता है, इनफैक्ट वो साइक्लिक भी हो जाता है. बट नाउ आई एम टेकिंग kx एज अ k मॉड्यूल, so it is not a finitely generated k module. Okay, so it is the kx is not a finitely generated module, and moreover you can say that
K is an infinite dimensional K vector space. अगर आप इसको वेक्टर स्पेस की तरह देख रहे हैं, और इट इज एन इनफिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर K आप कह लें. Now there is a remark that अब हम लोग जो ज्यादातर अपने इस कोर्स में इंटरेस्टेड होंगे फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे. So if M, so okay, we know that we have studied earlier that what is the sum of a submodules. So we know that if M is a, if N and हमने शायद K किया था, if N and K are submodules of M, ये मैंने एग्जांपल भी आपको करवाई थी, then N plus K, which is defined in this way that it contain elements which are in the form of x plus y, where x is an element of N and y is an element of K, is also an R submodule. Okay. So point here that we can take the sum, so we can define the operation of addition between submodules. ये हम लोग को, आप लोग को याद होना चाहिए. Now if M is a finitely generated R module, so what I can say that it's mean that M would be written in this form, x1 up to so on xn, that is and it is a set of all linear combination of now using this notation कि हमें that n plus k, just try to see that we can write this thing कि अगर मैं इसको divide करने की कोशिश करूं, that we can write this thing in this way, because this part is an element of the cyclic module generated by x1. The second part जो अगर मैं यहाँ पे लिखता, let's say the second part होता है, it is alpha 2 x2, it is an element of the ideal cyclic module generated by x2, and the third part would be an element of the ideal of the cyclic third part would be an element of the cyclic module generated by xn. So class, what is the point that we can write this thing in this way, that ये वाला जो पार्ट किससे बिलोंग कर जाएगा, cyclic module generated by x1, ये वाला पार्ट किससे बिलोंग कर जाएगा, cyclic module generated by x2, and up to so on ये वाला पार्ट किससे बिलोंग कर जाएगा, cyclic module generated by xn. It's mean that I can write this R module as a sum of these cyclic R modules. Okay. So what is the point that here that any finitely generated module could be written as a sum of cyclic R modules. तो इसको मैंने क्या लिख दिया, ये क्योंकि ये मेरे पास क्या है, साइक्लिक, ये मेरे पास क्या है, साइक्लिक है, क्योंकि हमने बाय डेफिनेशन देखा ना, बाय डेफिनेशन एवरी एलिमेंट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 x up to so on xn. तो पहले लीनियर कॉम्बिनेशन का जो पहली टर्म होगी वो किससे बिलोंग करिए, साइक्लिक मॉड्यूल जनरेटेड बाय x1. तो सेकंड टर्म इज एन एलिमेंट ऑफ द cyclic module generated by x2, and the nth term is an element of the cyclic module generated by xn. So these are all cyclic R modules. So these are all cyclic
R modules. And let's say so that what is the point that any finitely generated R module could be written as a sum of, or in fact as a finite sum, as a finite sum of cyclic R modules. Okay, class, so any problem in this remark? तो सिंपल सा रिमार्क है, उसमें आप लोग ये चेक कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से जो हमने C वाली एग्जांपल करी थी, that C as an R module, we know it is generated by 1n iota. Now this could be written in this form also. So it is a cyclic module generated by 1, which will generate the real part of a complex number. It is a cyclic module generated by iota. It will generate the imaginary part, and after taking the sum of the real part and the imaginary part, you will get the whole complex number. So that's why this cyclic module could be, this finitely generated module could be written as a sum of cyclic module. So important remark है, because बाद में हम ये कोशिश करेंगे कि cyclic modules हमें ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि एलिमेंट से जनरेट हो रहा है. तो whenever I will take a finitely generated module, तो मेरी कोशिश होगी कि इसको cyclic modules के सम में कवर लिख लूँ, and then cyclic module के generators के साथ कुछ काम करने की कोशिश करूँ. Okay. थोड़ा सा अब साइक्लिक मॉड्यूल्स को ही अब बिकॉज हम फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल्स में इंटरेस्टेड हैं, and every finitely generated module could be written as a finite sum of cyclic R modules. So it's mean that we need to study cyclic modules more carefully ताकि हम finitely generated modules के बारे में कोई बात कह सकें. So what is the first proposition या result आप कह लें? That whenever you have a cyclic module, so let's say if M is a cyclic R module, then M is isomorphic to R over I. And here M is an so here we are assuming that R over I is also an R module, and this is also, I will show you why R over I is an I module, and this is also an R module, and they are R module isomorphic. Okay, क्या? For some I, for I in an ideal of R. For an I, for some I. तो इस रिमार्क को अंडरस्टैंड करने से पहले, इस प्रोपोजिशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दैट हाउ कैन वी सी दैट R over I is an R module. सो एक रिमार्क ये है दैट we know that R is an R module. So we already know that R is a module over itself. So for an ideal I of R, R over I is an R module under the following operations. ओके, फर्स्ट ऑपरेशन क्या है? एडिशन. जस्ट क्या होती है एडिशन? तो वही होती है जैसे कोसेट की एडिशन हो जाती है, दैट R plus I into R dash plus I
it is equal to r plus r dash plus I. But now how can we scalar multiplication क्या होती है? That if r is an element of r and a plus I is an element of r over I, then r into a plus I, it is just equal to ra plus I. So I will just multiply this scalar with this representative. So here a is an element of r, so that's why ra is an element of r. So ra plus I is an element of r over I. So scalar multiplication is just defined in a very natural way, that we just multiply the coset of r over I, which is a plus I, with r, just multiplying r with the representative of the coset. So under this thing, you can consider r over I as an r module. So here in this isomorphism, what is my claim that this r over I is also an r module. Okay, and this, okay, in fact, this is if and only if condition. This is if and only if condition. If something is an R module, then M is isomorphic to R over I, or if M is isomorphic to R over I, then we will say that M is an R module. So what is the proof? So here we can see that if M, so suppose M is a cyclic R module. So what we need to show that if M is a cyclic R module, then we need to show that M is R module isomorphic to R over I. That is, we can generate M with an element of with X, where X is an element of R. Now define phi as a map from R to M in this way, that for an input R, output would be equal to Rx. कि अगर इनपुट एक स्केलर है, then output will be equal to the scalar times generators. So because M के एलिमेंट किस फॉर्म में होते थे? M के एलिमेंट किस फॉर्म में थे? They are in the form of R of X, where R is an element of R. So I defined this map. So one can see that this map is a surjective. This map is a surjective homomorphism. Why it is a surjective homomorphism? Because every element of M is in this form. Every element of M in this form. So whenever you will take this element R of X, so it has a pre-image. So that's why every element has a pre-image, because हर एक element क्या है? It is a multiple of a generator. तो वो जिस multiple के लिए if you take a typical element, it is always in the form of R of X. तो R of X का pre-image क्या हो जाएगा? Just R हो जाएगा. So that's why every element is a pre-image, and you can check easily that this is a R module homomorphism. ये R module की property को satisfy करने का. So phi is a surjective क्या वो सर्दी लग रही है? So phi is a surjective R module homomorphism, and because whenever you will take an element R of X in M, whenever you will take an element of R in this is in the form of R of X, and it has a pre-image which is R. So every element has a pre-image. Homomorphism के लिए आप check कर सकते हैं that if you multiply homomorphism of R1 plus R2, it is equal to phi of R1 plus phi of R2. So now using the first isomorphism theorem,
for modules. So using the first isomorphism theorem for modules. So again, what we have R over kernel of I would be R module isomorphic to module isomorphic. So, and now we know that kernel of I is an ideal of R because R, we are considering R as an R module. So ideals are submodules. So this is a required I. So if we put I is equal to kernel of I, then we can say that R over I it is isomorphic to 1. And ये हम लोग का requirement थी. Because what we need to show that if M is an R module, in fact आप इस कर्नल के बारे में क्या कह सकते हैं? ये कर्नल एक ऐसा आइडियल है जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. अच्छा, कर्नल में किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे? वैसे बात है बाय डेफिनेशन कर्नल में किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे? Kernel contain all those elements such that their image it is equal to 0. This is a definition of the kernel. और image of R किसके बराबर है? यहाँ पे मैप कैसे डिफाइन किया था? Image of R किसके बराबर है? Rx के बराबर. It's mean that is Rx it is equal to 0, where x is a generator of M. तो ये वाला आइडियल कौन सा आइडियल है? Sir, annihilator. Annihilator. So actually it is the annihilator because here we are assuming that M is generated by X. So it contains all those elements which are annihilating X. So actually the required ideal I, which is the kernel of I, it is the annihilator of M. So moreover class, what we can say that इसको अगर मैं ज़्यादा एलुबरेट करना चाहूँ, that R over annihilator of M, it is R module isomorphic to M. So where annihilator of IM is the required ideal. Okay, so whenever you are dealing with a cyclic R module, then the cyclic R module it is isomorphic to R over annihilator of M, and this is also an R module and this is also an R module, and they are isomorphic as R modules. Now for the converse, so conversely, if M is isomorphic to some module R over I, then one can see that R over I is a cyclic R module. ये अच्छा, हमें ये तो पता है कि R over R तो cyclic R module होता है क्योंकि 1 से जनरेट हो जाता है. अगर मैं R over R को मॉड्यूल लूंगा तो you can generate with the help of 1, because with the help of 1 you can generate all elements. In the same way, R over I is also is a cyclic R module, since every element of R over I it is in the form of R over I, and it could be written as a multiple of 1 plus I. So it's mean that this is an ideal generated by 1 plus I over R. So R over I is also a cyclic module. Why it is a cyclic module? Because R over I could be generated over R could be generated with the help of 1 plus I. जैसे यहाँ पे R over R किससे generate हो जाता था? 1 से generate हो जाता था. तो R over I over R is generated by 1 plus I. So it's mean that it shows that R over I the cyclic module, and since R over I is isomorphic to M, this is my assumption. So if M is isomorphic to a cyclic module, so it implies that M is
isomorphic to a cyclic R module R over I, which implies that M is also a cyclic R module. Okay, so यहाँ पे हमने just एक cyclic modules के classification कर ली. So we know two things that now we can classify cyclic module, that every cyclic module could be seen it is isomorphic to R over the annihilator of M. Every cyclic module M is isomorphic to R over annihilator of M in R. And also we have seen that a finitely generated module could be written as a linear combination of cyclic could be written as a finite sum of cyclic R modules. अच्छा class अच्छा ये बताएं कि just try to recall what is the definition of a basis in a vector space. यानी कि वो आपस में इंडिपेंडेंट होंगे और कोई सेट मतलब उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा है स्पैनिंग सेट और लीनियर इंडिपेंडेंट सेट. स्पैनिंग सेट और तो स्पैन भी करे और लीनियर इंडिपेंडेंट भी हो. ओके, और इसको हम मिनिमल स्पैनिंग सेट भी बोलते हैं. ठीक है, ये सारी डेफिनेशन है. अब हम कुछ मैं मॉड्यूल सीखता हूँ. अब हम इनकी ना, सिंस हमें वेक्टर स्पेस दैट से बात है कि मॉड्यूल्स का आइडिया ज़्यादा जनरलाइज है, तो हम उसके लिए बेसिस का कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करते हैं. बिकॉज स्पैनिंग का सेट तो मैंने आप लोग को दे दिया है. जो जनरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, फाइनेटली जनरेटिंग कॉन्सेप्ट है, वो स्पैनिंग का कॉन्सेप्ट है. तो वी ऑलरेडी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पैनिंग इन द केस ऑफ आर मॉड्यूल्स. But now we will see that that could be extend the idea of linearly independent set, which is already developed in the case of vector space, to the case of R modules. तो इसको elaborate करने के लिए just एक example देखते हैं जो हमने पहले भी कई मरतबा देखी है. So for example, now consider Z3 as a Z module. And Z3 as a Zn Z3 module. Okay, now both modules are cyclic. तो यानी कि दोनों cyclic हैं, इसका मतलब दोनों के generating set है मौजूद ना, इसमें प्रॉब्लम नहीं है. So Z3 would be generated with the help of 1 in Z. So इसका मतलब इसका generating set तो है. In fact वो generating set से उसमें सिंगल एक ही एलिमेंट शामिल है. And C3 could also be generated with the help of 1 bar in Z3. Okay, so here 1 bar is a generating set, and here also 1 bar is a generating set. Now also in the case of vector space, we know that not every generating set or spanning set is a basis. कि हर एक generating set या spanning set का basis होना तो जरूरी नहीं है. वो basis set जो linear independent, वो generating set जो linear independent होगा वही क्या होगा, basis होगा. नहीं, span तो generating का मतलब span कर रहा है कि not every spanning set और generating set is a basis. Why? Because generating set का linear independent होना जरूरी नहीं है. अगर generating set linear independent हो गया तो basis हो जाएगा ना. basis का मतलब spanning ही है. अगर generating set linear independent हो गया तो वो क्या हो जाएगा, basis बन जाएगा.
Up here we have two generating set or two R modules. So these are two different R module structures. So अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा जनरेटिंग सेट लीनियर इंडिपेंडेंट है. तो जो लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा वो जनरेटिंग सेट क्या बना रहा होगा, बेसिस बना रहा होगा. अब class try to recall that if a set contain a single vector, so what could be the definition of a linear independence set? अगर एक सेट में एक एलिमेंट शामिल हो, इस चीज को रिकॉल कर रहे हैं आप, अगर एक सेट में एक ही एलिमेंट शामिल हो तो लीनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या बनेगी? लीनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या होती है? whenever a linear combination is equal to 0, then the scalar should be equal to 0. तो क्या डेफिनेशन बनेगी कि whenever a linear combination is equal to 0, तो इसका स्केलर, तो this would be the definition. अब प्रॉब्लम है कि ये डेफिनेशन जब वेक्टर स्पेस में अप्लाई करते थे तो इन द केस ऑफ वेक्टर स्पेस whenever alpha times b is equal to 0, तो वो फॉरन अप्लाई कर दिया करता था कि, और अगर मैंने v को यहाँ पे 0 वेक्टर अज्यूम नहीं किया हुआ तो फॉरन अप्लाई कर दिया करता था कि अल्फा फिर क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा. बट दिस कुड बी द डेफिनेशन ऑफ, इस चीज से खैर मुझे प्रॉब्लम इशू नहीं है. What is the, just try to see the definition of a linear independent set for a if set contain a single element or a single vector. Actually, now using this definition, which set is a linear independent set? So there are two generating sets. So one is a generating set here. If you are considering Z3 as a Z module, and one bar is also a generating set here if you are considering Z3 as a Z3 module. But which generating set is a linearly independent set and which generating set is a linearly dependent? क्या दोनों linear independent हैं? ये भी हो सकता है. ओके, जस्ट डेफिनेशन अप्लाई करें ना, जस्ट डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करें. यहाँ पे स्केलर्स कहाँ से आ रहे हैं? ये लीनियर इंडिपेंडेंट बिकॉज अगर अल्फा एलिमेंट है जी से और अगर अल्फा टाइम्स 1 बार 0 से बराबर है तो क्या आप यहाँ पे हमेशा इम्प्लाई कर सकते हैं कि अल्फा 0 के बराबर होगा? ये यू कुड नॉट इम्प्लाई दिस थिंग बिकॉज अल्फा n भी तो हो सकता है, 2n भी तो हो सकता है. तो इसका मतलब ये किसी, ओके, एंड हियर अल्फा इज एन एलिमेंट ऑफ Z3 and here alpha is an element of Z3, that is it could be equal to 0 bar, 1 bar and 2 bar. So if alpha into 1 bar it is equal to 0 here, तो इसका मतलब ये कि अल्फा क्या हो जाएगा, खुद ब खुद क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा. क्योंकि मसला है कि ये किसी, क्योंकि अल्फा 1 के बराबर नहीं हो सकता बिकॉज 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है. 2 के इक्वल नहीं हो सकता, तो 2 डॉट बार इंटू 1 बार किसके बराबर है, 2 के बराबर. तो ऑटोमेटिकली अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा. बट हियर यू कैन नॉट इम्प्लाई दैट अल्फा इज, सिंस अल्फा कुड बी इक्वल टू n 2n अप टू so on. ये कुछ भी हो सकता है, n भी हो सकता है बिकॉज n इंटू 1 बार क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा. So it's mean that this generating set it implies that this generating set is not a linearly independent set, and this generating set the generating set plus it is also a linearly independent set. तो क्लास पॉइंट इनकी क्या है, पॉइंट ये है कि दैट नाउ in the case of R modules, what is the main difference? In fact, whenever you will take any generating set of Z3 as a Z module, in fact, जब कभी भी आप यहाँ पे बात कह सकते हैं that in this case any generating set is not a
बिकॉज आप जब भी कोई जनरेटिंग सेट लेंगे आप उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कभी भी लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। इनफैक्ट एनी जनरेटिंग सेट in this case, in fact, if we consider Zn as a Z module, नहीं कुछ प्रॉब्लम है, इसको दोबारा लिखता है। So what we can say that if we consider Z3 as a Z module, then you can see that then any generating set is not a linearly independent set. Why? Because whenever आप कोई generating set लेंगे and you multiply that generating set with n, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वो कभी भी लीनियर डिपेंडेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन लीनियर डिपेंडेंस में क्या होना चाहिए कि अगर स्केलर हमेशा क्या होना चाहिए, स्केलर टाइम्स वेक्टर, अगर 0 का रहा है तो स्केलर 0 का रहा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमेशा आपको n मिल रहा होगा कि आप उसको वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा when n is not equal to 0. So it's mean that in the case of modules it is possible that which is not possible in the case of vector space, but in the case of module it is possible that maybe you have an R module, it has a generating set, मगर उस R module की कोई basis ना हो। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल एक सिंपल एक R मॉड्यूल की ऐसी दिखा रही है, क्योंकि मैंने जस्ट अभी ये मोटिवेशन के लिए एग्जाम्पल दिखाई है कि हमने दो मॉड्यूल डिस्कस किए, दोनों के जनरेटिंग सेट थे, but one generating set is a linear independent set and the second generating set in the case of Z3 as a Z module is not a linear independent set. Moreover, you can see that in the case of Z3 as a Z module, whenever you will take a generating set, it is not a linear independent set. It means that you cannot find a basis for Z3 as a Z module. Okay, and in the case of Z3 as a Z3 module, you can find a basis because this thing is a linear independent set, and also it is a generating set. So now class, this leads to the idea of a free module. So this is something which is different if we compare this thing with the case of vector space. The case of vector space, जब भी vector space होती है इसकी कोई ना कोई basis मौजूद होती है. But here you can find out some R modules which has a basis, and there exists some R module which do not have R modules which do not have a basis. Okay. तो जिनकी बेसिस होती है हम उन मॉड्यूल्स को क्या बोलते हैं, फ्री मॉड्यूल बोलते हैं, एंड जिनकी बेसिस नहीं होती वो दे आर नॉट फ्री मॉड्यूल. तो फ्री मॉड्यूल मीन दैट अ मॉड्यूल विद अ बेसिस, एंड दिस इज नॉट अ ट्रिवियल कॉन्सेप्ट इन द केस. जैसे आपको वेक्टर स्पेस में कभी ये बात सोचा, वेक्टर स्पेस में होती है ना बेसिस. इनफैक्ट एक बड़ा मशहूर थ्योरम है दैट एवरी वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस, भले वो इनफिनिट हो, अनकाउंटेबल हो, मगर उसकी बेसिस जरूर होती है. बट इन द केस ऑफ आर मॉड्यूल इट इज पॉसिबल that maybe you have an R module and but you cannot find a basis for that R module. So R module with a basis is called a free module. So अब हम definition देखते हैं and then free module की
की डेफिनेशन देखेंगे और फिर उसके बाद एग्जांपल्स वगैरह भी देखने की कोशिश करेंगे। So let M नहीं फ्री मॉड्यूल की ये अभी लीनियर इंडिपेंडेंट की है, फ्री मॉड्यूल की बताऊंगा। वैसे मैं रिकॉल जनरल डेफिनेशन देख लेना लीनियर इंडिपेंडेंट की, वैसे तो मालूम है हम लोग को, तभी हम देख लेते हैं ना। मैंने उस वक्त तो एक सिंगल वेक्टर के लिए तो मोटिवेशन के लिए आपको बताई थी ना, तो बल्कि यहाँ पे जो मैं लिख रहा था मैं लिख देता हूँ। सो दैट इज Z3 as a Z module doesn't admit a basis set. So just वही वाली definition है that let M be an R module and such that M is generated by X alpha, where alpha is an element of I. That is ये जो X alpha है ये इसका जनरेटिंग सेट है। अब ये जनरेटिंग सेट भले इनफिनिट भी हो सकता है, इसका जरूरी नहीं कि फाइनाइट हो इनफिनिट भी, दैट्स व्हाई मैंने इस नोटेशन में लिखा है इट इज अ जनरेटिंग सेट। जैसे वेक्टर स्पेस का फाइनाइट डायमेंशन होना जरूरी नहीं है, इसी तरह फ्री मॉड्यूल्स का भी जरूरी नहीं कि उसकी फाइनाइट बेसिस हो, इनफिनिट उसकी बेसिस हो सकती है। तो दैट्स व्हाई मैं लीनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन जनरल रखना। So say that it is generated by these X alpha. So this so the set which is a generating set of M is called a linearly। अच्छा आप लोगों ने शायद कभी लीनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन ना इनफिनिट सेट के लिए ना देखी हो। आप लोगों ने जब भी लीनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन देखी हो फाइनाइट सेट के लिए देखी हो कि व्हेनेवर आवर लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 द ऑल स्केलर शुड बी इक्वल टू 0। इनफिनिट के लिए इवन द केस ऑफ वेक्टर स्पेस में ये होती है, अगर एक इनफिनिट सेट है यू नीड टू डिफाइन, तो आप इनफिनिट लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनाते, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट बनाते। तो ये बात याद रखिएगा कि दैट फॉर इनफिनिट सेट इज अ लीनियर इंडिपेंडेंट सेट if any subset is a linear dependent, if any finite subset is a linear dependent, उसका मैं जब भी कोई finite subset लूँ वो हमेशा linear independent है। इसका इस चीज को मैं यहाँ पे ज्यादा एलोबरेट करता हूँ। is a linear independent set if whenever इस सेट की हेल्प से मैं कोई finite linear combination बनाऊँ, इस linear combination को मैं finite बनाऊँ, whenever I will take a finite linear combination from this such that constructed from this set which is equal to 0, which implies that R alpha it is equal to 0. So इसका मतलब ये है, इस कंडीशन का मतलब ये है कि any finite subset of the if any of the generating set is a linearly independent set, then the generating set is a linearly independent set. तो अगर generating set का हर finite subset linearly independent है
then we will say that the generating set is a linear. Otherwise, अगर जनरेटिंग सेट इन्फिनिट है तो आप इन्फिनिट लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते. लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा फाइनाइट ही बनता है, ये बात याद रखिएगा. इन्फिनिट लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनता. तो आप किस तरह से एक इन्फिनिट सेट को लीनियर डिपेंडेंट शो कर सकते हैं? ऐसे शो कर सकते हैं कि जब भी आप उसका फाइनाइट सबसेट लें वो लीनियर डिपेंडेंट हो. तो इफ इट इज पॉसिबल दैट एनी फाइनाइट सबसेट इज लीनियर डिपेंडेंट, then we will say the whole generating set is a linear independent set. So that's why here in this definition, यहाँ पे just मैंने जो condition put करी है वो मैंने finite combination की करी है कि if it is a generating set is called an independent set if whenever I will construct a finite linear combination with the help of the generating set, then that and that linear combination it is equal to 0, then the all scalars should be equal to 0. So this is the definition of a linear dependent set. So again, a set is called a basis set. Something is if basis का मतलब क्या होता है कि वो generating set भी हो यानी कि spanning set भी हो. So basis set of an R module M of an R module M का मतलब क्या कि it is a generating set of an R module M and plus it is a linearly independent set. So if some set subset of an R module M is a generating set and it is also a linear independent set, then we will say that it is a basis set. तो basis set की वही definition है जो हमने vector spaces के अंदर करते हैं. So here and what is the definition of an R module that of a free module? That an R module M is called a free R module if it admits a basis. कि अगर एक किसी मॉड्यूल की अगर हम बेसिस फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो मॉड्यूल क्या कहलाता है? फ्री मॉड्यूल कहलाता है. तो फॉर एग्जांपल we know that Z3 as a Z3 module is a free module. Why? Because Z3 is generated by a 1 bar over Z3 and this 1 bar is a linear independent set, which implies that this 1 bar is a basis of Z3 as a Z3 module. Okay. But Z3 as a Z module, we already seen, is not a free module, which I defined earlier, because whenever it's not a Z3 module, because whenever I will take a generating set, मैं इसका कोई सा भी generating set लूँ Z3 में, whenever I will take a generating set Z3 as a Z module, उस जैसी generating set को मैं n से multiply करूँगा, आंसर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा, where n is not equal to 0. So it implies that any generating set is not a linearly independent set. That is, it means that Z3 as a Z module doesn't admit
a basis set. Okay. So it's mean that Z3 as a Z module is not free. Now the next actually या तो आप remark कह लें, इसको चले remark कह लें ज़्यादा अच्छा है, that how can इसके position के तौर पर ही कह रहे हैं that how can we characterize cyclic modules as free modules. पहले मैं cyclic modules को कैसे मैं characterize कर सकता हूँ कि वो free modules होंगे, वो आप लोग को आंसर पता है. A cyclic R module is a free R module. A cyclic R module M. A cyclic R module M, which is generated by X, is a free R module. क्या कंडीशन होना चाहिए? ऊपर वाली एग्जाम्पल से अभी भी मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको करवाई है. उन एग्जाम्पल्स मैंने कई मरतबा पहले भी डिस्कस किया है कि उसका जो जनरेटिंग सेट है एक्स लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए. लीनियर इंडिपेंडेंट कब होगा कि व्हेनेवर उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो स्केलर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. फिर इसका मतलब व्हाट यू कैन से अबाउट द एनिलेटर ऑफ M, which is the annihilator of X. इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये 0 के इक्वल होना चाहिए. उसकी वजह ये है कि जब अगर ये सेट लीनियर, ये फ्री मॉड्यूल है तो इसका मतलब ये लीनियर इंडिपेंडेंट होगा. तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट होगा तो इसका मतलब जब कभी भी कोई चीज X पर रिलेट करी होगी तो वो चीज क्या हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी. तो इसका मतलब हम बहुत इजीली कैरेक्टराइज कर सकते हैं साइक्लिक आर मॉड्यूल्स को. हमें सिर्फ साइक्लिक आर मॉड्यूल्स को ये चेक करना है और साइक्लिक आर मॉड्यूल्स का एनिलेटर चेक करना है. अगर उनका एनिलेटर 0 के बराबर है और साइक्लिक आर मॉड्यूल्स का, इसका मतलब वो क्या है? फ्री मॉड्यूल्स है. तो लॉजिक इसकी यही है कि दैट ये जो सेट है, क्योंकि हमें इसको लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाना था ना, तो बिकॉज ये एक्स जो है इट इज अ लीनियर इंडिपेंडेंट सेट इफ क्या कंडीशन हो कि व्हेनेवर आपके साथ आर एक्स मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो इट इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 0. सो दैट इज उसके जो एनिलेटर में है, क्योंकि एनिलेटर की डेफिनेशन क्या होती है कि इसमें वो एलिमेंट शामिल होता है जो मल्टीप्लाई विद एक्स आंसर 0 दे रहे होते हैं. तो अगर आर एक्स हमेशा आंसर 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब एनिलेटर में सिर्फ क्या शामिल होगा? सिर्फ 0 शामिल होगा. तो and moreover we know that जो M होगा ये आइसोमॉर्फिक किसके हो जाएगा? वैसे किसके आइसोमॉर्फिक होता था? R ओवर I, और I क्या होता था? एनिलेटर होता था ना. तो अब एनिलेटर किसके बराबर है? 0 के बराबर है. तो अब तो इसका ना R ओवर 0 R के इक्वल हो जाएगा. तो मोर ओवर M इज R मॉड्यूल आइसोमॉर्फिक टू R. M क्या हो जाएगा? R के R मॉड्यूल हो जाएगा. बिकॉज इसकी क्या लॉजिक है कि दैट सिंस R किसकी M किसके आइसोमॉर्फिक होता है? R ओवर एनिलेटर की. तो अगर एनिलेटर 0 के बराबर है तो M किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? फिर R के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा. ओके, सो क्लास अब यहाँ पे तो खत्म करते हैं और फिर एक और थोड़ी सी कैरेक्टराइजेशन देखेंगे फ्री मॉड्यूल्स की. फिर कुछ एग्जांपल्स भी देखना है फ्री मॉड्यूल्स की. तो नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा फ्री मॉड्यूल्स ही डिस्कस होगा और फिर हम लोग डायरेक्ट सम के ऊपर और फिर डायरेक्ट सम और फ्री मॉड्यूल्स का रिलेशन देखेंगे. क्या हो गया? नहीं मॉड्यूल्स तो यही है, इसके बाद टेंसर प्रोडक्ट है, प्रोजेक्टिव मॉड्यूल से बहुत काम है. तो बात क्लासेस आज ही डिस्कस हुआ भाई. 3 क्लासेस तो रेगुलर क्लासेस हैं, उसका 2 एक्स्ट्रा मेरी है, 5 क्लासेस हुआ.
5 क्लासेस में देखना बहुत काम हो जाएगा। 5 का मतलब ये 7 हो जाती है तो आपस में। देखिए अभी नेक्स्ट क्लास में ना हमारा जो डायरेक्ट सम है और फ्री मॉड्यूल्स वाला काम खत्म हो जाएगा ना, तो हम लोग के एक बड़ा सेक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2 टॉपिक्स रह जाएंगे, फिर टेंसर प्रोडक्ट रह जाएगा और प्रोजेक्टिव मॉड्यूल्स और सारा वो सब चीजें रह जाएंगी। बट करना पड़ेगा, ऐसी चीजें। एग्जाम तो बहुत बाद में, मतलब 18 को एग्जाम है। क्या अच्छी बात है, फिर तो आप नहीं, चलो अच्छी बात है कि अगर आपने देखा है तो ये तो मेरे लिए अच्छी इनके बात है, तो थोड़ी सी इनके समझ कि आपको ज्यादा बेहतर आइडिया होगा, कोई नई चीज आपके लिए नहीं होगी। तो इसमें चैलेंज जिस तरह से भी है इनके, आपने क्या कहते हैं कुछ